Hello and welcome back to Learn Loop. I am Nisha and I am thrilled to join Learn Loop as an English tutor and a creative writer. What do you think I am here for? I am here to guide you through your English learning journey and help you reach your full potential. So let us know more about our channel Learn Loop. Learn Loop क्या है? Learn Loop एक YouTube चैनल है जो हमने अभी रिसेंटली बनाया है for helping you to excel in CUET foreign language exams and topic preparation. You can join this channel for tips, tricks, detailed strategies और resources. इससे आपकी लैंग्वेज स्किल्स बूस्ट होंगी और आपकी जो एग्जाम परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बेटर होगी. Jamia Millia Islamia has a wide variety of courses to offer, but studying foreign languages at Jamia Millia Islamia can offer several benefits. So the first one is cultural exposure. ऑब्वियसली यू नो कि जामिया में ओवरऑल इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने. सो देयर इज अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स जिसकी वजह से एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा. द सेकेंड वन इज करियर अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली लैंग्वेज स्किल्स की बहुत डिमांड है और इससे आपको इंटरनेशनल बिजनेस, डिप्लोमेसी, ट्रांसलेशन और टीचिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ जाएंगी. द थर्ड वन इज एकेडमिक एक्सीलेंस. जामिया मिलिया इस्लामिया इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज. The fourth one is networking. जामिया में आके you will be able to connect with professionals और academics में जो कि बहुत सारे various fields में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो network है वो भी expand होगा. The next point is personal growth. Learning a new language can improve cognitive abilities जो कि सबको पता ही है और उससे आपकी problem solving skills भी बढ़ेगी. These advantages can make studying foreign languages at Jamia Millia Islamia a valuable investment in both personal and professional development. Jamia has a number of foreign languages programs. Undergraduate programs में आते हैं BA Honors in Spanish and Latin American Studies, BA Honors in French, BA Honors in Korean language, BA Honors in Turkish language and literature. Then we also have certificate programs. Certificate in Chinese language, certificate in French, certificate in Italian, certificate in Korean language, certificate in Portuguese, certificate in Russian, certificate in Spanish and certificate in Turkish along with certificate in Uzbek. ये सारे certificate courses part time होंगे. Now we have one doctoral program which is PhD in European Studies and Latin American Studies. फिर उसके बाद आते हैं diploma programs. Diploma in Chinese language, diploma in French, diploma in Italian, diploma in Korean language, diploma in Portuguese, diploma in Russian, diploma in Spanish, diploma in Turkish, diploma in Uzbek, intensive diploma in Chinese language. और ये सारे के सारे हैं वो भी पार्ट टाइम रहेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव एडवांस डिप्लोमा. एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच, एडवांस डिप्लोमा इन इटालियन, एडवांस डिप्लोमा इन पोर्चुगीज, एडवांस डिप्लोमा इन रशियन, एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश, एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश. Now let us talk about the fee structure of all the programs that we have talked about. So सबसे पहले BA Honors Korean Language, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो है ₹15,000 for the whole course for 3 years. Then the second one is MA Korean Language and Literature, which is 10,500. Diploma in Turkish part time 6,700. Diploma in Uzbek 5,710. Intensive diploma in Chinese language 5,710. Certificate in Turkish 6,700. Certificate in Chinese language 5,710 and certificate in Uzbek 5,710. And fee for all the other courses that are mentioned above is 7,200 each. Syllabus for every course is very detailed and is intensive. So हम सारे syllabus का link description में add कर देंगे and also if you want any detailed video on the particular course or the syllabus you can let us know.